send your kids there because they'll have a good time. I think university, you should go there for the experience. I don't think you should go there and think that it's something you need to life, because a lot of people do well without university, but it's a great experience, and if you can afford it for your family and your kids, let them enjoy that. But Why so, wouldn't you? So why high right? school though specifically? You think is good enough baseline education? 100%, But- and the socializing skills, because you need that. So if that's a good baseline Bro. education, high school, right now in our day and age, almost everybody has a bachelor's degree. Bachelor's degree has become a high school. You need a Which is master's. why you don't need You the need a bachelor's master's. degree anymore. You need a master's for an MBA. No, but I'm Because saying everybody bachelor's has it. become a सना आप ऐसे करो, baseline. सना It बात is, and that's why it's worth आप उस nothing. कुर्सी पे जाओ तो मेरा जरा कैमरा फोकस नहीं हो रहा, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सना से और भी करना है. Because everybody has the bachelor's degree, it's worth nothing. Just like a high school. Bachelor's degree, I agree, is But high not school worth too much. degree, same thing. It's like No, but high school, they're still kids. They still need to learn what they're doing, and after that, I'm saying they Bro, can either work but or the take time off to decide the what they're doing. transition from high school to university, it was extreme for me. So like the difference between learning Yeah. from high school Like, and it university changes was completely. you're left on your own to Yeah. like fight the world basically at this Okay. point. You know, like- Even if you did a year of it, your Yeah. life gets changed like quickly. I remember living on campus and things were, because I didn't study that well in grade 11 and 12. Yeah. But when I got to first year, I'm like, oh my god, no It's one's all on babying you, you at yeah. this point. But it was And science. they're taking your money. It was No, but okay, even it is science, but I like feel even like just an for first 6 months are you, tough. it's up to you to show up Remember- to your high school class. 100%. Nobody's calling home and You going, guys- अच्छा बात okay, didn't बताओ show up सना. to school सना today. आप मेरी तरफ इधर छोड़ो. Yeah, but अच्छा you're saying in university, it's Yeah. not. Yeah, It's but a- see, the a thing is, it's not different responsibility. for me because I didn't show up to high school anyway. अच्छा I मैं आप actually did it सना like से पूछना university. चाह रहा हूँ. Yeah, सना yeah. आप बताओ कि यूनिवर्सिटी जरूरी है, पढ़ना चाहिए, जरूरी है या नहीं है? चलो ये बताओ, जाना चाहिए यूनिवर्सिटी. I feel like it's become a baseline education. So like It's like Sarah the was saying, equivalent to high high school's school. become is a baseline that you need to Yeah. know. Now I feel like slowly a bachelor's has become a baseline because Yeah, it doesn't do too much soon for you. like even just to get a regular job, I feel like they're gonna say that okay, high school is like whatever, Fair point. everybody has it. Do you have a university bachelor's degree? I think that education standard is gonna go up and up because we're becoming like everybody's getting a bachelor's. अच्छा अच्छा एक बात और मैं शेयर करूँ आप लोगों से. मुझे आप ये बताएं, चाहे One last thing, the time also compared to the 70s and 80s, the time has changed a lot in terms Yeah. of how many people have degrees now. So the value of a degree is less in terms of what kind of job you can get at the end. अच्छा Yeah. जॉब से हटके मैं बता रहा हूँ, आप सर्च करो इंडिया में, अपने रिश्तेदारों से पूछो, दोस्तों से, पाकिस्तान में और इंडिया दोनों में जो करोड़पति है, मिलियनर है, जिसको हम कहते हैं अरबपति कह उनके पास लें, degree वो नहीं अपने हैं क्या Degree नहीं होगी उनके पास. नहीं, वो लोग अपने बच्चों को पैसा तो उनके पास बहुत है, Yeah. गाड़ियां बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये नहीं समझो यही है, वहाँ बहुत एक से एक पढ़ा है इंडिया Yeah. पाकिस्तान में पैसे वाले, वो अपने बच्चों को डिग्री के लिए बाहर क्यों I भेजते tell हैं? you चलिए what, बता. it's a status thing. नहीं तो एक स्टैंडर्ड तो बड़ा है. Right now, Yeah. if I can afford it, like if we had $500,000 to $1 million, I could probably go to Harvard. Huh. And even though I was a mediocre student, as long as Harvard stamps it, I will get a job that pays me probably like तो एक $500,000 a year. तो right डिग्री off का the bat. एजुकेशन का It's just स्टैंडर्ड है ना, because, you know, it's not Harvard, इसकी एक वैल्यू तो है ना. Harvard, but Yeah. bro, उसकी it's value based तो है on ना. status. Let's just be honest. Yeah. चलो Like the स्टेटस ही rich- ले लो. I the think rich so, but kids- that's what I think it is. But even Yeah. to some level, I don't know. I guess everybody's gonna have opposing views. It depends on what you want for yourself and the way you perceive education. Education to me is not necessarily necessary in school. You can educate yourself outside of school. Intelligence and formal education are two totally different things, in my opinion. ठीक है. Yeah, I it think doesn't mean everyone because can you do- haven't everyone gone can to do high good in school. Like sometimes Yeah, bro. you So actually, There's Usama a taught me that. sentiment. There's a sentiment. Brown people, especially, because we're in the Desi community, I Desi. can't talk for everyone else, Yeah. but I would say probably even Middle Eastern, Chinese, they all Sorry. really think the same. They have this conception that if your child does 90s or 100% in school, they're the geniuses of the No, world. it's working. I disagree with you. Anyone, at least in my field, I did biology, chemistry, physics, all of this. It's all about sitting and putting effort into it. If you Yeah. sat at home 5, 6 hours, 7, 8 hours like a full-time job and study, Yeah. I'm guaranteeing you that any person will get good marks. Any good person doesn't take a genius. You just have to work hard at it. But it shows you worked hard if you got good marks. Yeah, So it's related to hard work, not because you're smart. So that's the confusion people make. You see someone with good marks, you think they're very smart, but what you should be is they're wow, hardworking. they're extremely hardworking. These people work people are hard. the difference. Yeah. Right? ठीक है ना. अच्छा एक बात तो मेरी एग्री कर लिया. सना कुछ भी आज भी अपने आप को इंडियन भले कैनेडियन, लेकिन बेसिकली तो इंडियन कहलाएगी ना. Yeah. आप पाकिस्तानी कहलाते हो नहीं कहलाते हो, ये तो इससे इनकार तो नहीं है ना. मैं कह रहा हूँ कि इतनी आबादी है, मिलियंस की, अरबों की वहाँ की मिला के, वहाँ उसी को अगर आप सोचो, वो कहते हैं
डिग्री जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के, जितने पैसे वाले, जितने इंडस्ट्रियल है, सबके बच्चे बाहर डिग्री लेके आते हैं, भले घूम फिर के आए, लेकिन You're डिग्री right. चोरी नहीं करते, बाहर उनको Yeah. कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ता, पढ़ के डिग्री लेके उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट, उसका लेवल बहुत So अच्छा हो if we जाता है. compare education from the Western countries to the other countries in the world, we are ranked like probably Our standards are higher. top 50 in the world. It's a big deal. If you're going to some of the schools, they're Huh. ranked even top 100. It's a huge deal in terms of standards of education. But we're not talking about standards of education. Should we study in Pakistan or India or here, right? We're not talking about that. We're Okay. talking about general क्या education. कह- When you Tell- come to But- education, One अब last सना को comment, बोलने one दो. last, if you take your degree here though, and you went to a different country, You can take it anywhere. it would be valued a lot. Yeah. So if you moved your life to Pakistan, there will be people willing to But hire okay, you. I have something else to ये say मैं agree though. करता हूँ, ये That सही being कहा. said, okay, like our education in Pakistan is not valued as much outside, but I would argue that the education there is as good or possibly better. yeah, And that's it's what not- I was I would gonna say say. those- because I've studied- Why is Pakistan a nuclear power when it's such a young country, right? There's 300 million people. We suffer from poverty. We have all kinds of political and issues in that country. We have nuclear power. Why do we have nuclear power? Yeah. Why are we one of the fastest growing nations in the world? If our education is that bad, clearly we're doing something right in the education system. It's taking some time to get to the level of this country. But they're But you know- they're sending them abroad probably, and they're bringing some You of know those ideas why? back. Like, I learned- You know why? Because we value education here more in the whole system. Systematic approach. Yeah. In Pakistan, you can every kid has a degree. They're smarter than probably everyone in this room. By the 100%. way, they work harder. Their days, like Their we- days, they're they're different. sharp. Right? Pakistani अच्छा, kids are different. Indian But- kids too, but but over Desi kids are sharp. Like Yeah. let me give you an example of the education there and the education here. I studied in grade 5 in an Indian international school, and we learned bedmass in grade 5. Okay, when I came here, I didn't learn bedmass till grade 9. Yeah, so it's like There you 3-4 year difference. मैं ये बात मैं करने लगा था. मेरे कुछ दोस्तों के बच्चे जो बड़े होके गुरु के यानी इन फर्स्ट ईयर इंटर में 11 ग्रेड 12 में यहाँ आए, जब वो पढ़ने लगे ना, आप लोग भी उनको जानते हो, वो कहते हैं हम तो हैरान है कि यहाँ की क्या पढ़े. हम बोला नथिंग, देयर इज नथिंग टू No, लर्न. exactly. पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं. कहते हैं जो हमने Yeah. 7वीं जमात में, जो 6ठी Yeah. जमात में हमने जो वहाँ पढ़ लिया, बोला Yeah. अभी हम क्या पढ़े. Exactly. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो इतने होशियार उसमें रहे या Yeah. इसके सिस्टम में, वो एक यानी इंजीनियरिंग दो इंजीनियर बने और Yeah. उनके बेटियां वो भी माशाल्लाह उसमें, क्योंकि वो वहां से पढ़ के आए. Yeah. वो कहने के हमें यहाँ तो Yeah, एजुकेशन. students- तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बैक कंट्री के एजुकेशन को कहते हैं ना, वहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है. अब जाके प्रॉब्लम आ गई, ये नकल और चीटिंग और बदमाशी और गुंडागर्दी और क्लाशनकोफ कल्चर, ये चीजें जब ज्यादा आई ना, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए. टीचर भी बेचारे डरने लगे. ये बदमाशी पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हुई पिछले आप अगर 10 एक और component is when we're talking about हाँ. money, jobs, status. आप अगर कोई if you take someone that's a 100% student, whether it's Pakistan or here, हाँ. and a person that has like 70-80, like just passing mark, लेकिन जो 70-80% person has good networking skills, has good social He's gonna beat skills. everyone. हाँ. Yeah. He's gonna beat any Pakistani or any Canadian kid educated with higher It's marks true. just because the person who is hiring you, right, as the boss, like when we look at it, when we're hiring people, we don't look at all these studying this, that. We're like, is this person like good street and book smart? Yeah. दोनों चीजें. Why मुझे ये बंदी पसंद आई या नहीं आई, right? और कोई लोग ऐसे भी होते हैं, book smart होते हैं, लेकिन वो बात नहीं कर सकते, socially awkward होते हैं. हाँ. तो देसी पेरेंट्स का ये इशू है कि वो इस चीज पे फोकस नहीं करते कि आपको थोड़ा बहुत like charisma होना चाहिए, like etiquette होना चाहिए, जिसमें लोग आपको पसंद भी करें. क्योंकि जिसके बाद 100% मार्क्स होते हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सक्सेसफुल होंगे फ्यूचर में. Right? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब नतीजा ये निकला कि बहरहाल जो ग्रेजुएशन ज़रूरी है. मैं तो इस पे एंड करूँगा. चलो मेरी वीडियो काफ़ी हो गई. सना ने अभी भी कुछ बोलना चाह रही थी, अगर बोलना चाहो तो आपको टाइम देते हैं. What's दो your मिनट- last statement? दो Last 1 minute statement from everyone. My statement is that education is great, it's important, but it doesn't necessarily need to be done in a system like university. So should people go to university or not? Should people, that depends from person to person. I can't tell you if they should or should. ओके. Yeah. सना, Yeah, Ozair basically said it perfectly. I feel like it's up to person, but I feel like the baseline education, like high school, we say like you need to go to. I feel like university is becoming almost the same. No, Because it's teaching you new skills that high school doesn't teach you at all. And so that, but
you don't have to take your degree and go into exactly what you go into. You can do whatever you want. Whatever you want. Yeah, ये कहता हूँ। Exactly. Just use it. It's become like a high school diploma. You keep it on the side. You never look at बाकी it जो again. मर्जी करो उसमें। Exactly like that. Yeah. So when this conversation started, Dad said, "Don't try different things outside your field. Disagree. Try every single thing because you will know what you don't like. Yeah. How will you know? You think your life is gonna be this way, but you try it the first day in your life. You're like, oh shit, I made a big mistake. I hate it. Right? Yeah. Try everything. Second thing for me, talking about high school, university, or college, my baseline would be that you still attend college or university because it really built my foundation as to work hard. At least in sciences, I can't talk about everything, but the structure that I hated and I pulled my hair out for has given me the capacity to operate daily in the things that I do. Otherwise, I don't think I'd be able to completely do it. So that's my ending. बेटा मैंने भी अपने हेयर बहुत पुल किए जब भी मैं गंजा हो गया Yeah. ज्यादा पुल नहीं करना You're अपने hair। appreciated afterward, Okay. but same point. I went to sciences. I'm in business altogether. You can do anything you want. वो तो मैं भी कहता रहा हूँ मेरा पॉइंट ये था कि यूनिवर्सिटी जाओ भाई ग्रेजुएशन करो और उसके बाद डू व्हाटएवर यू वांट Yeah, actually, it's smart. But- It's smarter. Like people want to go to one tip when I was looking at like medical school and all these things. It's much smarter for you to go do like arts or do music or anything really unrelated to sciences. Get high marks. And then do the minimum test at the end. You have better chances of getting into medical school, law school, 100%. than the regular greater person average, yeah. with a better average. And because most people go the traditional route, so avoid that. Take any courses, and then you can find your way there. तो उसामा ने एट द एंड एक बात और शेयर करता हूँ इसने आपको तो पता ही होगा मेडिकल डॉक्टर बनने से इसने क्यों इनकार वालों में मैंने मेडिकल में हमारा पक्का प्लान था कि ये बायोलॉजी में डिग्री लेके ये कहने लगा ये इनकी बोला इनकी लाइफ ही बोला ये बहुत ही खराब लाइफ है तो मुझे ये बताओ अब भी दायरा को उसमें क्रिब में सुला रहे हो तो अब ये बैठा हुआ थपकी दे रहे हो तो अब लाइफ क्या वही लाइफ उनकी We'll have this conversation in 5 or 10 years. We'll see. If my life is more, I would say my life is still happier than most doctors. 100%. हाँ ये डॉक्टर्स की तो लाइफ को पसंद ही नहीं करता No, because I know what they have to They have do. to work too hard. Yeah, I know कहता what हूँ they have to उनकी do. लाइफ सिर्फ पेशेंट He Lawyers- knows, like, my lawyers- cousin is a doctor and he's Lawyers seen and like doctors. day and No, night, not even like because even I COVID. just know because I was so involved. Like I know this for years. It's not a life I chose. I have to work 20, 30 years in something. I want to love what I do. And they never चलो stop ठीक है studying. वह बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई चलो ईद मुबारक सबको एंड पे लाइबा रहिए अगर लाइबा व्यू देना चाहे उसका मूड नहीं है व्यू देने का क्योंकि डिग्री के तो बहुत ही खिलाफ है 30-second thing. You're Like most what? successful. आपने कोई फाइनल व्यू देने इसके डिग्री के ऊपर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऊपर Not really. क्या कुछ फिर भी Everyone said कुछ it. थोड़ा बहुत बेटा बोल लो आप क्या No. कहना चाहोगे I didn't like school. That's it. यू डिडंट लाइक I'm very happy with my career, how God नहीं, made it वो- happen. नहीं। Allah knew कि इस बेचारी को बचाओ school से. Uzair knew. मैं इसको 2 मिनट का दूंगा कोई बात नहीं आसवा तेरे व्यूज कोई है यूनिवर्सिटी से तू तो मैं बैचलर पास हूँ मैं क्या कर तू हजे बैचलर ना कह रही है सो मेरा तो व्यू की Mom, कहना what is your bachelor? BSc Yeah. बैचलर Tell ऑफ साइंस Tell him. अच्छा साइंस Chemistry बैचलर में। ऑफ साइंस केमिस्ट्री में है ना नहीं बायोलॉजी में अच्छा बायोलॉजी Oh में my क्या है? God, Sawa. मैं सोचा केमिस्ट्री में You went She on cut biology. frogs up. या आई डिड फ्रॉग Mom आई did डिड frogs? अर्थवॉर्म अब वो सारा किया ये सारा किया लेकिन 2 बंदे साथ खड़े होते थे चीख जब मारो तो पकड़ने के लिए बट आई डिड अच्छा डिग्री होल्डर हूँ डिग्री होल्डर अच्छा नतीजा क्या निकला मुझे ये बताओ नतीजा ये निकला These are the kind of people schools produce. नतीजा क्या निकला ये She's बताओ in Canada living her best रिजल्ट life. क्या है उसका I'm living डिग्री my का best life. कोई फायदा हुआ जिंदगी में तुम्हें नहीं हुआ क्या हुआ फायदा भाई जब तुम इंटरव्यू के लिए गई हाँ जो हम श्रीलंका गए वीजा ऑफिसर ने कहा कि यू आर आल्सो ग्रेजुएट यू उसने कहा ग्रेजुएट और हैं? उजैर मेरे साथ छोटा सा बेबी था हाँ, लेकिन तो उसने- उजैर ने हेल्प की उसने कहा आप बेबी को लेकर बाहर चली जाएं क्योंकि Mom बेबी got डिस्टर्ब saved. होगा हाँ। आई सेव माय हाँ, लाइफ लेकिन उससे पहले Yeah, उसने ये कहा ना Yeah, कि उसने- यू आर आल्सो ग्रेजुएट Yeah. एंड मुझे कहा कि Yeah. दैट्स गुड थिंग और उसके बाद उसको कहा कि उजैर को लेकर निकल जाओ बोला मैं इसको देखना नहीं चाहता आप नहीं पीते हैं ना क्या तो लेनी फिर है आप लेना आपने खुद नहीं है। बताना है इसको मेरे लिए स्मॉल स्टिप टी रेगुलर देखा Can I have a one small steep tea regular? Small vanilla iced coffee. Small vanilla iced coffee? Coffee.
Coffee. No, sorry, small vanilla iced coffee. Iced coffee. Yeah, Cold brew or original? it's the original. Original? Yeah. Okay. And can I get a everything bagel, double toasted with butter? Double toasted. Two of them. Two of those bagels. Okay, 2 drinks and 2 bagels? 2 drinks and 2 bagels, and what do you want to drink? No. Okay, that's all. Do you want to donate for the cafe or buy bracelet? We're okay, thank you. Okay, sorry for the ये पकड़ूंगा इनकी देखिए हो जाए हो गया चल ये क्या है ये मम्मा की ये पकड़ा Thank you. ये क्या बस हो गया सब कुछ अभी नहीं, We got a water bottle too, right? मैंने वाटर बॉटल तो नहीं ली Bagel. That's fine. लेनी है पानी No, sure. नहीं वो अगर पीनी है तो ले लेते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ तो अभी कर देंगे वाटर बॉटल लेते हैं उसको बोलते हैं शायद 1 सेकंड लगेगा I gotta buy my पानी bottle. तो पीना चले तो हम आए हुए थे आज आए हुए थे हम टोरंटो और उजैर को ड्रॉप करना था क्योंकि उसका कुछ गाड़ी में इशू था तो हमने उजैर को ड्रॉप किया कॉफ़ी ली और पापा जैद ने तो ली नहीं क्योंकि लॉन्ग ड्राइव पे वो कह रहे मैं कॉफ़ी नहीं पीता आपके लिए मैंने बेगल लिया अपने लिए नहीं लिया था आपके लिए लिया इसलिए कि आप खा लेंगे हाईवे पे चढ़ जाए फिर मैं आपको देती हूँ खाने के लिए और आप लोग बताएं कमेंट करके कि आप लोगों को मेरे बाल कैसे लगे डार्कर या लाइटर जो पहले मेरे थे अच्छे थे और लेफ्ट एक चप्पा बाल कट गए हैं तो मेरा सर इतना हल्का लग रहा है लेकिन मुझे थोड़ी सी सैड भी हूँ कि मेरे लंबे बाल खत्म हो गए और बट इट्स फाइन और आपको दिखाते हैं थोड़ी सी टोरंटो की गलियाँ यंग स्ट्रीट यहाँ का बड़ी मशहूर और उजैर को हमने ऑफिस में छोड़ा पीछे पता है उसको डाउनटाउन में उनका ऑफिस है वहाँ छोड़ के और अब आ जाए आप हमारे साथ स्ट्रीट वापसी की तरफ अब हमने गार्डनर पकड़नी है ये क्या हो गया इधर आ जा बच्चे तो टोरंटो आए हुए हैं कॉफी आपने देख ली थी उजैर ने और पापा जैद ने ऑर्डर की थी मैंने पी ली मेरा ऑर्डर तुमने नोट नहीं किया जब मैं ऑर्डर दे रहा था मैंने किया है इसमें नोट खामोशी से नोट अच्छा? किया है ताकि बिल्कुल ओरिजिनल आए कि कैसा पता लगे कि मैं भी ऑर्डर दे सकना है मैं वैसे तो मेरा ऑर्डर ਚੱਲਦਾ पर्सनली ज्यादा ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵਨ टू गोल एंड राउंड बिट फलाना ठिकाना फेस टू फेस बात करने की बात और होती है जाहिर है चले बट इट वाज अच्छा गुड शेर काला कीता तो मुंह मेरा चिट्टा हो गया ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ करनी चाहिए थी शेर से चले अंधेरा 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 और वो सीएन टावर था चले सीएन टावर आपको दिखाते हैं आगे गार्डनर यहीं से जाएंगे ना पता चले सीधे निकल गए कंस्ट्रक्शन हो रही है ना हर जगह कंस्ट्रक्शन ही रहती है यहाँ पे ये और देखो कुछ नहीं ब्रिज होता। कितना जबरदस्त इसकी भी देखो हाँ, अभी तो बन रहा है रिपेयर हो रहा है कंटिन्यू चलती कब रहती से है बन रहा है आज का बन रहा है ये कोई पूरे कोविड में ही बनता रहा ये वेस्ट ये वेस्ट हो जाएगी लेफ्ट वाली लेन सीएन टावर देख रहे बहुत दिन हो गया था मैंने कहा आपको भी दिखा दें किस दिन शायद आएंगे यहाँ पे नीचे वॉक करके इनको सारा दिखाएंगे और ये रॉजर सेंटर भी बताओ ना हाँ रॉजर सेंटर तो साथ है लेकिन मैं कह रही हूँ किस दिन आके इनको पूरा ये दिखाइएगा वॉक करके बल्कि अब तो खुल गया होगा ना सीएन टावर के ऊपर जाए बहुत अरसा हो गया जमाने हो गए अपन गए थे ऊपर खुला कि नहीं खुला लेकिन ये रॉजर सेंटर जहाँ ये गेम होते हैं ना या वो सारे जिसका ये डोम खुल जाता है ऊपर ये से खुल जाते हैं। सीएन टावर हम लोग बहुत बच्चे छोटे छोटे थे उस वक्त गए थे ऊपर आते थे उसके बाद नहीं गए थे लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ जाएं क्या कहने हैं कमेंट पर करके बताएं कि अगर हम सीएम टावर जाना चाहें तो आप हमारे साथ चलेंगे तो सब तैयार है तो सब तैयार होंगे समथिंग हैपेंड पता नहीं क्यों है तो एजेंट बंदा जो Yeah. रोक के दो पुलिस वाले रोक के खड़े में अल्लाह ही रहम करे आजकल वैसे जो कुछ हो रहा है लेकिन वो बंदा क्या पैदल ही है गाड़ी तो कोई भी नहीं खड़ी जिसको रोका उन्होंने नहीं उसके तीनों गाड़ियां पुलिस की नहीं हाँ तीनों एक ब्लैक कार थी दो व्हाइट हाँ तो कार ब्लैक भी पुलिस के अंडर कवर्ड थे और दूसरे तो ये बंदा तो क्या वॉक पे उसने कोई किसी को कॉल किया उसने या क्या था चलो जो
सो लाइफ टाइम भी खुल गया है इधर। आज से खुल गया। उसामा उजैर तो आज गए थे। मुझ पे उसका क्या असर पड़ता नहीं, है? आप पे तो नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी वॉक के अलावा मैं थोड़ी ये शुरू करूँ, अपना दोबारा से ज्वाइन करूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ ईद के बाद से। क्या ख्याल? हाँ नहीं ये तो ठीक है। ईद का और क्या भाई, आपको पता है ईद जिम पे- 50% जो है Capacity कैपेसिटी पे खुले हैं, लेकिन पता नहीं, मैं तो गए हुए अब एक जमाना हो गया, लगता है जिम जाते हुए भी डर लग रहा है। इसी में थी ना मेंबरशिप पहले तुम लोगों की सबकी? मतलब हाँ, मेरी Lifetime मैं तो पे? खैर 100% तकरीबन इसमें 99% आ रही थी पहले कोविड से अच्छा, पहले। कोविड से पहले। अब तो खैर 2 साल हो गए हैं गए हुए भी जिम मुझे, लेकिन देखते हैं, सोच रही हूँ क्या करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना तो सोची जाई जिते सोचन दा टाइम थे उते नहीं सोचिया, हुन सोची जाई बस भी जिम में ज्वाइन करो, शुरू हो जाओ बस। इसमें क्या ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣ ਦਵਾਂ, चीकू वर्गा मुंह हो गया मेरा। मुझे समझ नहीं आती, थोड़ी सी मैं कोशिश करता हूँ डाइट की, यार वाक ज्यादा करता हूँ, फौरी असर मेरा मुंह मेरा चिपक जाता जिदा कि भुख दा मारिया हुंदा बंदा। तो जैद को मैंने मीट पिक करने भेजा था, मैंने कहा आज मेरा अंदाजा मूड नहीं था। अंदर जाने का, आप जाएं। तो क्या वजह? ये अंदाजा ये था कि देर होगी, क्योंकि अभी तो हमने ऑर्डर किया, उन्होंने टाइम जो देना क्योंकि जब बताया था। ईद का टाइम है तो Busy है बहुत। बहुत बिजी है, तो उन्होंने मुझे कहा था 3-4 बजे, तो मैंने कहा नहीं नहीं प्लीज, रिक्वेस्ट की कि भी अगर जल्दी बुला दो। जैद के घर से बोल रही हूँ, तो आप प्लीज आसपास जैद बोल रही हूँ, तो आप प्लीज वो तो जल्दी कर दें। तो आधा घंटे का कहा था, जैद गए अंदर, जैद कहते जब मैंने उन्हें कहा जैद का ऑर्डर है, तो वो जैद कर लगे रेडी है। वो 15 मिनट 20 मिनट हुए तो मैं क्या आसपास बड़ी गल है भाई, तेरा ना चलता भाई। या नहीं ना की बात नहीं है, वो लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत देते नहीं, हैं, अच्छे, बहुत ही अच्छे लोग। जानते हैं, मतलब वीडियोस वॉच कि करते मम्मा हैं, तो कुकिंग भी करती है, हाँ। वो भी करती तो है। बहुत अच्छा मीट होता है उनका। अगर आप अपने इस एरिया में रहते हैं, मिन्हा हलाल मीट से मीट ट्राई करें, बहुत तो साफ सुथरा होता है, स्मेल भी नहीं होती है उसमें, उनका स्टोर भी बहुत साफ सुथरा है, मुझे इसलिए पसंद है वो। तो मैं जो भी ऑर्डर करूँ बहुत अच्छा आता है। हाँ बोले आप। यानी मिसेस सागा का कौन सा, ऐसे आपने तो कह दिया इस एरिया, क्या पता कौन सा एरिया, बस आप थोड़ा मेंशन कर दिया करो। मिन्हा वो गूगल करेंगे तो आ जाएंगे। हाँ तो मिन्हा बस करेंगे। हलाल मीट वाले, तो इसमें शक कोई नहीं, बहुत ही अच्छा फ्रेश मीट होता है इनका। बिल्कुल।